So today we are going to revise the impedance matching. What is the purpose of impedance matching? Actually, if we have a transmission line, and to this transmission line, सबर करें जी, आवाज सबको आ रही है? आवाज आ रही है जी सबको? जी सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा अच्छा, सही है, बस ठीक है जी, फिर शुरू करते हैं। मैचिंग नेटवर्क अगर आप ये देख लें कि बेसिकली हमारे पास है ट्रांसमिशन लाइन होता है और ट्रांसमिशन लाइन के साथ एक लोड कनेक्टेड होता है, और लेट से ये कंसिडर है लोड और ये दिस इज अ ट्रांसमिशन लाइन. So when this transmission line has the characteristic impedance Z0, and if this ZL is equal to Z0, then it is perfectly matched and there is no reflection. No reflection and on the transmission line, and all the power is absorbed by the load. Or this load, like when we connect power amplifier, we connect a filter, let's say if we connect an antenna. So if this devices are perfectly matched, so all the power is absorbed by that device and nothing is being reflected. Now there are cases when the load is not perfectly matched. That is the case that ZL is not equal to Z0. So what we want to do, we want to minimize the reflection. So what we do, that we insert a matching network. As it is shown over here. So what will happen, that when the incident wave that is coming toward the load, so the partly it is reflected back, but this reflection is only limited within this region. This reflection is limited to this region. So there is no reflection in this region. However, there is reflection in this region. There are different methods. In which we can achieve the matching. So the one is known as the lambda by 4 transformer. So what is meant by lambda by 4 transformer? It is used in the case when this load ZL is real. So we use lambda by 4 transformer. How it is used, we will be explaining it later on in this presentation. Now, so with this lambda by 4 transformer, this load is matched to this 50 ohm, and but there are cases when ZL is not real. It has a value R plus JX. Then we can also use this lambda by 4 transformer, and we will using the D max and D minimum concept that we will be explaining these two today in today's lecture. ये हम किस तरह करते हैं, ठीक है जी. And then there is another method as well, in which we can insert capacitance or inductance in parallel with the load to achieve the impedance matching. And there is also another method that is called single stub matching, which is shown over here. Hopefully we will be discussing before the session of this revise this single stub matching as well. Now we will go to the lambda by 4 transformer first, but before that we have to go through certain concepts again.
कि अगर ये देखें कि ये है हमारे पास एक लोड लगा हुआ है ये यहाँ पे, और जो कि है ZL इज इक्वल टू 2 माइनस J1, 2 minus J1. So minus J1 is this portion is of minus J, and this is the region of plus J over here. So if you can see that this is 2, the real is 2, and then minus Jx, and this x is 1. So if we can see from here that this is 1 over here, this is 1 over here, and this one goes like this. This is the line of this is the line of this this one x r, and this one minus j1, and then the real is 2. So if we see that the 2 is over here, so if we come over here, so this is this 2 line. So these two intersect at this point. At this point, the two intersects. So when this is the intersection point. So putting a compass at the center, then what we can do that we can draw a circle around this point of this radius OP, this radius. So this will give us the reflection coefficient. जो नीचे हमारे पास क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का स्केल है, उससे उसकी वैल्यू मेजर करेंगे. उस वैल्यू को मेजर करने के बाद हमें क्या देगा, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट देगा. So this is the reflection coefficient. So now see this one. This is again 2 minus J1, 2 minus J1, and it wants us to find out कि अगर हमारे पास एक लोड है ZL है और इस ZL के साथ एक ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है, and this is this transmission line, and this transmission line is of length 0.1 wavelength. ठीक है जी, 0.1 wavelength. So what is the value of input impedance? Z in की क्या वैल्यू है? यहाँ पे हमारे पास लोड कनेक्टेड है, and this load is connected to a transmission line, and this transmission line is of length 0.1 lambda. So what is the value of Z in at this point? हमें ये मालूम करना है, तो इसको स्मिथ चार्ट से किस तरह करेंगे? अगेन वही this is the imaginary part, and this is this real. So this is this point 2 minus J1. Now if we draw a line from the center of the Smith chart, from the center throughout the Smith chart, तो हम ये देख लेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू बनती है, ये आउटर एक्सिस पे जो वैल्यू बनती है वो है दैट इज 0.287 लैम्डा, 0.287 lambda. Now what we are going to do, we are going to increase its length by 0.1 lambda. तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.387 lambda. तो ये 0.287, यहाँ पे अगर हम आगे चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास आता है 3.87 lambda. So from this load to this point we have moved 0.1 lambda. From load to this point, this new point is the distance is 0.1 lambda. अच्छा, और हम
why we haven't gone in this direction, counter clockwise direction में क्यों नहीं गए counter clockwise, and we have moved in the clockwise direction, because you can see over here, यहाँ पे लिखा हुआ है wavelength, ये जो डायरेक्शन है ये है wavelength, wavelength towards generator। क्या मतलब है कि we from the load we are moving towards the generator in this direction, so this is this clockwise direction, so here this line intersect this one over here। अगर इस पे हम ये देख लें तो ये है इसकी रियल वैल्यू जो कि है, और ये है इसकी इमेजिनरी वैल्यू। यहां से हम इसकी रियल वैल्यू ले लेते हैं और यहां से इसकी इमेजिनरी वैल्यू ले लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगी 0.6 माइनस जे 0.66। ठीक है जी। और इसको अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो है ये हमारे पास नॉर्मलाइज वैल्यू है, 50 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास डी नॉर्मलाइज आ जाएगी। ठीक है जी। ओके, इसको फिलहाल ये अच्छा, ये यहाँ पे अगेन के हमारे पास एक लोड है 2 प्लस J1, 2 प्लस J1, 2 इज दिस रियल वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे है, वो यहाँ पे आ जाएगी, और 1 की वैल्यू ये है, यहाँ से बिल्कुल ये रियल और इमेजिनरी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे पॉइंट ए पे 2 प्लस J1, this give us this load impedance 2.2 plus J1। अच्छा, ये जो रियल एक्सिस का ये पोर्शन है फ्रॉम द मिडल टू दिस पॉइंट, तो अगर आप यहाँ पे देख लें सेंटर में है 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास है इंफिनिटी। इसी तरह सेंटर में 1 है, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0। तो on this right side, on this side, the value, the impedance increases, the impedance is increasing, and on this side the impedance is reducing। So यहाँ पे जहाँ पे अगर हमारे पास on this side, this is the side of V maximum, voltage maximum, और ये है, ये हमारे पास क्या है, V max का साइड है, और ये है V मिनिमम का साइड, V मिनिमम का साइड। अब ये देखें कि अगर ये हमारे पास लोड है और हम इस तरफ आए, इस तरफ आते जाए, इस तरफ आते जाए, इस तरफ आते जाए, तो at this point the impedance is maximum, और फिर अगर हम यहाँ से फॉरवर्ड आगे चले जाएं, यहाँ से इधर, the impedance reduces। तो जाहिर बात है कि अगर हमारे पास Z मैक्सिमम होगा,
Z मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा। लाइक एंड व्हाट इज द, अगर हमारे पास ओपन है तो यहाँ पे है वोल्टेज मैक्सिमम, और अगर हमारे पास एक शॉर्ट सर्किट है तो वहां पे होगा एक, उसके अक्रॉस होगा वोल्टेज मिनिमम। ठीक है जी, ये है हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम और यहाँ पे होगा वोल्टेज मिनिमम। तो अगर इस, दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस लोड ZL, अगर यहां से हम ये लाइन लगाए सीधा इधर, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द लोड। यहाँ पे वैल्यू है 0.213, 0.213, और is the location, this is the point 0.25, 0.25 पे ये कहाँ पे चला जाता है, ये वोल्टेज मैक्सिमम के पे यहाँ आ जाता है। सो द डिफरेंस बिटवीन 0.25 माइनस 0.213 lambda is equal to 0.037 lambda, is equal to 0.37 lambda। तो क्या मतलब है कि अगर हम लोड से डी इतना ट्रेवल कर ले, कितना ट्रेवल कर ले, इतना ट्रेवल कर ले, इतना ट्रेवल कर ले, तो फिर क्या होगा, हम वोल्टेज, हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम आ जाएगा। और अगर इसके साथ अगर हम मजीद आगे ट्रेवल करें, और यू नो दैट मजीद आगे ट्रेवल करें, तो अगर इतना मजीद आगे ट्रेवल करें तो ये हमारे पास वोल्टेज मिनिमम आ जाएगा, जिसके लिए ये डी मिनिमम का ये लिखा हुआ है कि दैट इज डी मिनिमम। सो डी मिनिमम हाफ ऑफ द स्मिथ चार्ट, अगर स्मिथ चार्ट का आधा आप ट्रेवल करेंगे, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, दैट इज इक्वल टू 0.25 लैम्डा। तो क्या है कि दिस मच इज 0.25 lambda plus